everyone, welcome back to the Math Solver. Today we are going to start with the new module, that is double integration. So let's see how we can evaluate double integral. So as given here, the double integral can be evaluated by successive single integration as follows. So if A is a region bounded by the curves y is equal to f1 of x, y is equal to f2 of x is equal to a, and x is equal to b, then double integral over the region A of the function f of xy dA is equal to, here outer integral going from 0 to b, a to b, inner integral going from f1x to f2x, f of xy dy dx. So where the integration with respect to y is performed first by treating x as a constant, and then second integral can be evaluated with respect to x. ओके नाउ इसके अंदर समझने वाली बात ये है कि देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू f1 ऑफ x, ये एक कर्व हो गया, y इज इक्वल टू f2 ऑफ x, ये सेकेंड कर्व हो गया, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b, ये टू डिफरेंट कर्व्स हो गए. अब यहाँ पर x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, ये दो चीजें जो है वो कांस्टेंट्स हैं, वेयर a एंड b आर कांस्टेंट, और यहाँ पर f1x f2x ये टू डिफरेंट फंक्शन ऑफ x हैं. तो जो डिफरेंट फंक्शन ऑफ x मींस जो वेरिएबल के फॉर्म में होंगे उन्हें हम इनर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे, और जो कांस्टेंट्स होंगे उन्हें हम क्या करेंगे, आउटर इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे. सो यहाँ पर आउटर इंटीग्रल हो गया a टू b और इनर इंटीग्रल हो गया f1x टू f2x. ओके, तो f1x और f2x किसके लिमिट है, y के. देखो यहाँ पर क्या लिखा, y इज इक्वल टू f1 ऑफ x एंड y इज इक्वल टू f2 ऑफ x. मतलब ये जो f1 ऑफ x और f2 ऑफ x है, ये किसके लिमिट्स है, y के. ओके, सो इसलिए यहाँ पर हम पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे, और जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो x को हम कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, और फिर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल परफॉर्म करेंगे और y को कांस्टेंट परफॉर्म करेंगे. ओके, उसे ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट. सो लेट्स सी सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज फंक्शंस. ओके, तो इनके हिसाब से हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ. ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, इवेल्युएट इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 to 1, इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 to x e raised to x plus y dy dx. Okay, this is the first question. Now see here, inner integral जो है वो 0 to x जा रहा है और outer integral 0 to 1 है. तो inner integral किसके फॉर्म में है, x के फॉर्म में है. ओके, तो इसे हम परफॉर्म करेंगे पहले y के रिस्पेक्ट में. सो सॉल्यूशन, now this is integral going from 0 to 1, 0 to x e raised to x plus y into dy dx. Now I will write the given function e raised to x plus y as e raised to x into e raised to y dy dx. Okay, now since inner integral in the form of x, so means ये किसके लिमिट है, y के. तो पहले हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में. तो जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x वाले फंक्शन को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट. तो यहाँ पर x वाला फंक्शन क्या है, e रेज टू x. तो हम e रेज टू x को कांस्टेंट एज्यूम करके आउटसाइड द फर्स्ट इंटीग्रल कर देंगे, और यहाँ पर dx लिख देते हैं. ये बच गया हमारे पास 0 to x e रेज टू y dy. ओके, नाउ अच्छा, ये dx को हम यहां से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन है हमारे पास इसे सेम लिखते हैं हम dx यहाँ पर. सो नाउ इंटीग्रल गोइंग फ्रॉम 0 to 1 e रेज टू x, e रेज टू y का इंटीग्रल e रेज टू y हो गया एज इट इज. ओके, एंड वी सब्स्टिट्यूट द लिमिट 0 to x dx. ओके, now उसे थोड़ा हम ऊपर स्लाइड कर लेते हैं. सो इंटीग्रल 0 to 1 ये e रेज टू x हो गया. नाउ
लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो विल गेट e raised to x minus e raised to 0 dx. Okay, so this will become integral 0 to 1 e raised to x. Now e raised to x minus e raised to 0 is 1, so 1 dx. Now we'll multiply the outer e raised to x जो बाहर है ब्रैकेट के उसको अंदर करेंगे, तो we'll get e raised to 2x minus e raised to x. Okay, dx. अब इंटीग्रेट करेंगे, so we'll get integral of e raised to 2x as e raised to 2x upon 2 minus e raised to x का इंटीग्रल e raised to x. Now lower limit 0, upper limit 1. Now we'll substitute this one as e raised to 2 upon 2 minus e raised to 1. पहले हमने upper limit substitute कर लिया. Now we'll substitute lower limit, so we'll get e raised to 0 upon 2 minus e raised to 0. Okay, so we'll have e square by 2 minus e minus 1 by 2 plus 1. Okay, so now here we'll get e square by 2 minus e plus half. Now I can take half common, so we'll get 1 by 2. यहाँ पर मिलेगा हमें e square minus 2e plus 1, and we can write this expression e square minus 2e plus 1 as e minus 1 the whole square. Okay, so this is our required answer. Okay, we'll solve one more problem. Okay, so let's take one question as evaluate double integral. इनर लिमिट है हमारा 0 to 1, आउटर लिमिट है 0 to x, x into y dy dx. Okay, now solution. So now just focus. First we'll write the same problem, integral 0 to 1, integral 0 to x, x y dy dx. ठीक है, अच्छा अब देखो इसके अंदर जो इनर लिमिट है उसका जो इनर लिमिट किसके फॉर्म में, x के फॉर्म में. अगर वो x के फॉर्म में है तो हम किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट में. ठीक है, तो जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा इंटीग्रल 0 to 1. नाउ हियर जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x को क्या ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट, तो ये हम लेते हैं साइड में. नाउ y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2, lower limit 0, upper limit x dx. Okay, so integral 0 to 1, this is x. Now we'll substitute the limit, so we'll get x square by 2 minus 0 dx. So we'll get integral 0 to 1, इस 1 by 2 को हम outside of the integral लेते हैं, we'll get x cube dx. Now so here we'll get 1 by 2, x cube का इंटीग्रेशन x raised to 4 upon 4. Okay, now lower limit 0, upper limit 1. We'll substitute the limit, so 1 by 2 will get 1 by 4 minus 0, which is equal to 1 by 8. Okay, this is the solution of the integral. Okay, so just go through with the rules. Okay, इसमें ज्यादा रूल्स हमें कंसिडर नहीं करना, सिर्फ दो रूल्स है. सिंपल इनर इंटीग्रल किसके फॉर्म में है उसके हिसाब से हम इंटीग्रेट करेंगे, और सिंपल सक्सेसिव इंटीग्रेशन है जैसे नॉर्मल इंटीग्रेशन. ओके, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. सो गो थ्रू इट, प्रैक्टिस इट, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन.